Hello students, Assalamu alaikum and welcome you once again. बाबा पाण पंहिंजे previous lecture में locomotion in invertebrates start कयो हुयोसीं ऐं invertebrates में ॿुधायो हुयो त locomotion कीअं थींदी आहे. सो उन्हनि invertebrates में पाण जेके organisms discuss कयासीं जिन organisms खे पाण study कयो उन में सभ खां पहिरीं हुई jellyfish. ठीकु आहे. jellyfish खां पोइ पाण आयासीं earthworm ते earthworm खां पोइ नंबर 3 स्नेल के डिस्कस कयो थी. सो हियर पाण रिमेनिंग जेके ॿ आहिनि इनवर्टिब्रेट्स उन्हनि खे अॼु डिस्कस कंदासीं. उन्हनि मां सभ खां पहिरीं पाण वटि आहे लोकोमोशन इन स्टारफिश. सो लोकोमोशन इन स्टारफिश. ठीकु आहे. हाणे स्टारफिश में लोकोमोशन कीअं थींदी आहे. अगेन बाबा लाइक जेलीफिश दिस आल्सो inhibits in the sea. यानी ये अगेन स्टारफिश जेका है होगा ये समुद्र में मौजूद होंगी है. ठीक है. So it is present again in the sea. And to which phylum this belongs? बाबा this belongs to phylum Echinodermata. So it belongs to phylum Echinodermata. ठीक है. इकाइनोडर्मेटा फाइलम सां बिलोंग कंदी आहे स्टारफिश. ऐं जेका स्टारफिश आहे उनमें छा हूंदो आहे त वरी जॾहिं पाण स्ट्रक्चर ठाहियूं न त सेंटर में हिते अच्छा पहिरीं पाण चवंदा त छा जे थ्रू मदद यानी लोकोमोट कंदी आहे. हिन जा जेके लोकोमोटरी ऑर्गन्स आहिनि पार्ट आहिनि उनमें हिकिड़ो आहे एम्प्यूला. सो द फर्स्ट इज एक्चुअली एम्प्यूला एंड अदर वन इज सक्कर. सिंपल आहे. एम्प्यूला ऐं सक्कर जी मदद सां जेका आहे हिन में लोकोमोशन थींदी आहे. पाण थोड़ो उन स्ट्रक्चर ॾिसूं. से दिस इज द सेंट्रल डिस्क. ठीक है. हिन में भाई सेंट्रल हिकिड़ी डिस्क हूंदी आहे विच ते. ठीक आहे. सो दिस इज द सेंट्रल डिस्क दैट इज प्रेजेंट हियर. ऐं उन खां पोइ हिन में पंज जेके आहिनि से आर्म्स हूंदियूं आहिनि. सो देयर आर 5 आर्म्स. दे आर एक्सटेंडेड. से दिस इज द वन आर्म. ठीक. उन खां पोइ भाई हिन जी बी आर्म आहे. ठीक. then there is the third arm. ठीक है. there is the fourth arm and there is the fifth arm. ठीक है. so ये मैंने सेम आगे पक्के आगे स्ट्रक्चर जो ठही हुआ. ठीक है. so this is the starfish. ये वो starfish है. हाणे इन starfish में पाण ॾिठोसीं त हिन जी बॉडी में जेका ये 5 arms हूंदियूं. so this is actually the arm. ये arm. ठीक है. 5 arms हूंदियूं. हाणे छा थींदो आहे स्टारफिश में हिन डिस्क वारे पार्ट में हितां देयर इज एक्चुअली एन ओपनिंग. हिते हिकिड़ी क़िस्म जी ओपनिंग मौजूद हूंदी आहे. हिकिड़ो सुराख हूंदो आहे. हिन मां पाणी इंटर थींदो आहे. सो वाटर इंटर्स देयर. ठीकु आहे. हाणे जीअं अंदरि पाणी इंटर थींदो आहे त अंदरि बाबा हिन जे अंदरि छा हूंदो आहे. देयर आर एक्चुअली द केनाल्स. ठीक. हिन जे अंदरि केनाल्स मौजूद हूंदा आहिनि. सो वाटर इज एक्चुअली फिल्ड इन दीस केनाल्स. इन केनाल्स में पानी जेको आहे न इन आर्म्स जे केनाल में पानी फिल्ड हूंदो आहे. सो अगेन दीस केनाल्स आर एक्चुअली अटैच्ड विद वन अनदर जस्ट लाइक दैट. ठीक आहे. सो वाटर जेको आहे उहो इन स्टारफिश जे केनाल्स में अची वेंदो. ठीक आहे. सो देयर इज केनाल. हाणे हिन केनाल में छा हूंदो आहे त हिते एक्चुअली हिकिड़ा मस्कुलर ऑर्गन्स मौजूद हूंदा आहिनि. ठीक आहे. सो देयर आर द मस्कुलर ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट. हाणे पाण हिकिड़े केनाल खे ॿाहिरि कढूं ऐं ॾेखारियूं त हर एक केनाल में हंड्रेड्स ऑफ मस्कुलर ऑर्गन मौजूद हूंदा आहिनि. ठीक. हाणे मस्कुलर ऑर्गन कीअं हूंदो आहे. से दिस इज द मस्कुलर ऑर्गन. इन मस्कुलर ऑर्गन जो हिकिड़ो हेड लाइक स्ट्रक्चर हूंदो आहे. दैट इज कॉल्ड एम्प्यूला. ऐं हेठां ही स्ट्रक्चर हूंदो आहे. दिस इज सेड टू बी द सक्कर. ठीक. सो देयर आर मेनी ऑफ दीज मस्कुलर ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. ठीक आहे. सो दैट्स लाइक दैट. ठीक है. अहिड़े क़िस्म जा खोड़ सारा यानी हिकिड़े ई हिन पूरे अंदरि खोड़ सारा जेके आहिनि उहे प्रोजेक्शंस आउटिंग्स जेके आहिनि मौजूद आहिनि. सो दीज आर दी मस्कुलर ऑर्गन्स. हिननि खे पाण चवंदा मस्कुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन अ स्टारफिश. ठीकु आहे. सो हाणे मस्कुलर ऑर्गन्स आहिनि इन्हनि जो जेको ही आउटर पार्ट आहे जेको ही पार्ट आहे दिस पार्ट इज द एम्प्यूला जो अंदर जी तरफ आहे. ठीक आहे. एम्प्यूला हेड लाइक स्ट्रक्चर आहे एंड दिस पार्ट इज सेड टू बी द सक्कर. हिन खे सक्कर चइबो आहे. ठीक आहे. सो हाणे छा थींदो जीअं पाणी अंदरि ईंदो सो वाटर इज फिल्ड विद इन दीज
structures ठीक within these muscular organs and ultimately हिने के अंदर चाहूँगा वो इनके अंदर muscles होना so these are the muscular organs ठीक है so similarly it pushes the water जे भर जाए तो पानी को push कर दो जे पानी को push कर दो तो पानी निकलनो शक्कर समा पर शक्कर देखो है वो वाली सरफेस अटैच थी ठीक है so शक्कर का मसल्स अटैच थी इन दावन सरफेस वरे जे शक्कर का मसल्स से क्या है वो ये रिलैक्स इंदा अल्टीमेटली पानी वरी वापस इनपुला में मिलो युता वरी हटंदो अगेन वरी बिहाइंड सो यानी कि समझी वॉकिंग लाइक मूवमेंट जे है ना मिसाली सरफेस आ ही इन जा के से यानी आर्म्स सो इते शक्कर अटैच थींदा पानी निकलंदो अटैच थींदा वरी पानी इंदो वरी डिटैच थींदा वरी पानी निकलंदो वरी अटैच थींदा सो इन द सेम मैनर माने जी वॉकिंग थींदी आहे जस्ट लाइक दैट ठीक है सो जस्ट लाइक दैट ठीक ये भी वॉकिंग थी so this organism just like this एड़े किस्म दी वॉकिंग देगा है कि आर्म से कहीं so surface के तो बंदो उन surface ते mostly rocks वगैरह होना या तो सी जो शोर होगा किनारा होगा उन देने मूवमेंट देगा वो ये थी ठीक है so this ampulla actually contracts and ultimately water देखो वो remove थी तो जिन पानी निकलना तो ये शक्कर देखो अटैच थी ठीक है so शक्कर का मसल देखे हम वो attached in with the surface so sucker actually attaches with the surface ये surface attached in ठीक है and again वरी जो का जी relax ना muscles है ना ultimately पानी वरी वापस अंदर आ जाएगा इंपुला में इंपुला बाजी में दो and वरी detached in वरी भी surface attached in so ये एक जगह आगे जगह ये तो मतलब देते attached to ये थे attached हाँ ये इतना इन्हें चढ़ाए वरी इतने attached in eta chana with attention so जगह ना ये होगा नजर ही हो जाए in this manner this movement takes place ठीक है ये किस्म की मूवमेंट देगा तो मतलब यानी बिल्कुल वॉकिंग वाले स्टाइल में देगा जाना मूवमेंट इंडिया so this is all about the locomotion in starfish so locomotion in starfish में हमारे पास muscular organ उन्हें में ampulla and sucker मौजूद ना so ampulla जगह है ना radial canals से अंदर पानी जी हुआ so they are filled and जी push करना तो water देखो है पानी को बाहर निकलने दो आई शक्कर जो है वो अटैच थींदो ठीक है विद सरफेस आई उन अटैचमेंट खां पोइ अगेन वरी डिटैच थींदो वरी ॿियनि पाणी निकिरंदो वरी अटैच थींदो अक्सर करे तव्हां ॾिठो हूंदो त पाण वटि बाबा अहिड़े क़िस्म जो हिकिड़ो प्लास्टिक जो हिकिड़ो ठहियल हिकिड़ो केप लाइक स्ट्रक्चर ईंदो आहे उन में काच लॻल हूंदी आहे पाणी त में लॻाईंदा मोस्टली तव्हांखे कारनि में गाॾियुनि में मिलंदी हिते ई हणंदा आहियूं न त एयर जेको आहे निकिरी वेंदा त बंदि थी वेंदो अटैच थी वेंदो वरी पाण में कढंदा वरी एयर अची वेंदी वरी हिते ये जोर देता है मेरे अटैच थी सो इनमें भी ये होगा सो दिस एम्पुला आर लाइक दैट ठीक है ये सरफेस अटैच ना जी पानी निकल तो अटैच होगा वरी जी रिलैक्स ना वरी पानी ची तो वरी उता डिटैच थी वरी बिहान लगेगा सो इन दिस वे ये जगह मूवमेंट है नहीं होती जस्ट लाइक दैट ठीक है जी मूवमेंट है ठीक सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ मूवमेंट देयर ओके सो आने वाला साथ द लास्ट वीक वी आर डिस्कसिंग द लोकोमोशन इन कॉकरोच ठीक so आने पर कॉकरोच के डिस्कस करूंगा कॉकरोच में लोकोमोशन की इंडिया so let us discuss locomotion in cockroach okay but cockroach जो है as we know that this belongs to phylum arthropoda ठीक है so मान लेना सी it belongs to phylum arthropoda ठीक है यानी arthropoda phylum जो मेंबर है ठीक है cockroach आई cockroach में जेका लोकोमोशन थींदी आहे उनमें इनमें ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि इनमें फीट हूंदा लेग्स यानी नहीं हूंदियूं सो कॉकरोच हैज़ एक्चुअली 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड इट हैज़ आल्सो पेयर ऑफ विंग्स यानी इनमें विंग्स मौजूद हूंदा सो इनमें लोकोमोशन जेका थींदी बाबा लोकोमोशन ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे यानी ही रनिंग बि कंदो आहे ठीकु आहे ऐं गॾोगॾु फ्लाई बि कंदो आहे सो लोकोमोशन में हिन में बाबा हूंदियूं लेग्स so एकड़ो तरह के legs भी होने को नाम wings ठीक है so legs are actually these legs have 3 pairs
ठीक है। लेग्स जा जेके हूंदा उहे 3 पेयर हूंदा आहिनि हिन में, सो 3 पेयर्स मौजूद हूंदा, यानी लेग्स टोटल घणी हूंदी बाबा 6, सो इट हैज 6 legs and 2 pair of wings, ठीक है, यानी 4 जेके आहिनि हिन में विंग्स हूंदा। सो यानी कॉकरोच जो आहे बाबा वो रनिंग भी करे सघे थो लेग्स की मदद सां, ठीक है, एंड इट कैन आल्सो फ्लाई, हिन में ॿई सलाहियतूं हूंदियूं आहिनि, जेकॾहिं चाहे त रनिंग करे हलंदो घुमंदो फिरंदो चाहींदो त उॾंदो, सो ॿई जेके आहिनि सो हिन में एबिलिटीज़ आहिनि, सो इट हैज आल्सो विंग्स एज वेल एज लेग्स। हाणे पाण जेके थोरो कॉकरोच जो स्ट्रक्चर ठाहियूं, बाबा से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉकरोच। Say this is a cockroach, and in a cockroach के 6 legs मौजूद होंगे। So there are actually 6 legs, ठीक है, and 2 pair of wings also. Wings, there is also wings. On the same manner there is also wings. सो यानी इनमें लेग्स बि आहिनि ऐं विंग्स बि आहिनि, सो इन्हनि विंग्स ऐं लेग्स की मदद सां चाहे ही फ्लाई कंदो आहे, ठीकु आहे। सो हाणे हिन में एक्चुअली लेग्स में मसल्स हूंदा आहिनि, अगेन सेम मसल्स, हिकिड़ा बाबा मसल्स जेके हूंदा उहे एक्सटेंसर्स आहिनि, पाण ऑलरेडी पढ़िया आहियूं, ऐं ॿिया मसल्स हूंदा फ्लेक्सर्स, जंहिंजी मदद सां यानी एंटागोनिस्टिक मसल्स हूंदा, ठीकु आहे। सो दिस इज द एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन सां जॉइंटेड फीट्स अटैच हूंदा, सो हिन में एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स यानी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जेके आहिनि उहे मौजूद हूंदा। सो उन्हनि मसल्स जी मूवमेंट सां छा थींदो त हिकिड़ियूं जेके लेग्स जेके अॻी वारियूं हूंदियूं खे अॻिते पुल कंदियूं, हीअ वरी पोयां उनखे धिकींदियूं, सो इन दिस मैनर जेको आहे सो हिननि में मूवमेंट थींदी आहे या लोकोमोशन थींदी आहे। सो वी हैव सीन दैट इन केस ऑफ कॉकरोच लोकोमोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है बाबा। लोकोमोशन के बाद हिकिड़ो हीअ रनिंग करे सघे थो विद द हेल्प ऑफ दीज लेग्स, उन लेग्स में मसल्स आर एक्चुअली अटैच्ड विद दिस एक्सोस्केलेटन, यानी हिते बाबा मसल्स हूंदा, ठीक है, एंड दीज मसल्स आर अटैच्ड विद दिस एक्सोस्केलेटन, ऐं ये मसल्स जेके हूंदा एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स हूंदा। सो जीअं असांजी आर्म्स पे आहिनि बाबा मूं तव्हांखे ॿुधायो हिकिड़ा आहिनि एक्सटेंसर्स मसल्स एंड ॿिया आहिनि फ्लेक्सर मसल्स। सो इन द सेम मैनर दीज 2 मसल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन केस ऑफ कॉकरोच, ठीक है। सो इन दिस वे इट एक्चुअली रन कंदो आहे, ऐं वरी हिनखे विंग्स बि हूंदा आहिनि, सो विंग्स की मदद सां ही फ्लाई कंदो आहे विद द हेल्प ऑफ विंग्स। समटाइम्स जॾहिं हिनखे को शिकार वग़ैरह पकड़णो हूंदो आहे या हिनखे पाण के शिकारी खां भॼणो हूंदो आहे त उन सूरत में ही उड़ी वेंदो, भॼी वेंदो। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो इनवर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन कीअं थींदी आहे हिनखे पाण कंप्लीट कयोसीं। होपफुली पाण पंहिंजे नेक्स्ट लेक्चर में जेको हूंदो असांजो उहो लास्ट टॉपिक हूंदो हिन चैप्टर जो, ठीक आहे, दैट इज़ लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स, ठीक आहे। वर्टिब्रेट्स में उन जो थोड़ी डिस्कशन थियल आहे, उन जो आख़िरी हवालो आहे, सो पंहिंजो लास्ट टॉपिक जेको आहे सो उहो हूंदो, उन खां पोइ पाण 3rd चैप्टर स्टार्ट कंदासीं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।